इस मंत्र को जी करके दिखाया है। पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की। Namaste and welcome to this very, very special edition of the Super Saturday Debate. It's no debate, it's just perspectives from three tall leaders that we'll bring to you. But first, ladies and gentlemen, let's collectively wish a very, very happy birthday to Prime Minister Narendra Modi. And contrary to the advice given by Shah Rukh Khan that he should take a day off and chill, Prime Minister was up and about. His engagements were right through the day and his mission, Bharat, as always. A statesman, a visionary, and a symbol of service and dedication. Prime Minister Narendra Modi turned 72 today, and wishes poured in from across the world, with politicians and dignitaries extending their greetings to the PM. It was a working birthday for the Prime Minister as he released 8 African cheetahs who were being translocated to India in a historic mission to Madhya Pradesh's Kuno National Park. Speaking after the event, the Prime Minister gave a strong message to the world that economy and ecology are not conflicting fields. अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। The Prime Minister's next destination was Shiopur in Madhya Pradesh, where he attended an exhibition organized by self-help groups. In an emotional address, the Prime Minister told the crowd that he missed meeting his mother today, but was happy to see that thousands of mothers were blessing him today. आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। Then, the Prime Minister was back in the capital in the evening, and he launched the national logistics policy that will promote seamless movement of goods and enhance the competitiveness of the industry. Touted to be a game changer, the policy will focus on process re-engineering, digitization, multimodal transport, and will bring down the logistics cost as well. हमें जिस चीते की गति से पूरब से पश्चिम तक माल ले जाना है, उस गति को हमने पकड़ रहा है जी। इसके पीछे 8 वर्षों की मेहनत है, नीतिगत बदलाव है। 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं। Meanwhile, there were multiple events held across the country, with priests from the Kashi Vishwanath temple performing prayers for the Prime Minister's long life, while there was also a blood donation drive that was organized in Dehradun. BJP's national president JP Nadda even launched an exhibition on the Prime Minister's life and launched Unity and Diversity festivals to mark the Prime Minister's birthday, which will conclude on Mahatma Gandhi's birth anniversary on the 2nd of October. And on this very special effort, we'll have 3 ministers from the Prime Minister's government, from his cabinet, former and current. 3 different perspectives. One, a techpreneur turned politician. The other, a tribal leader who's championing the cause of tribal welfare and also Jal Shakti. And third, Mukhtar Abbas Naqvi, Parliamentary Affairs, Minority Affairs Minister. All 3 leaders will be joining us one after the other with their perspective. And joining us right now is Rajiv Chandrasekhar, the MOS Electronics and IT. Rajiv ji, namaste. Thank you very much for joining us and making the time. Let me first ask you, Prime Minister has turned 72.
What would you like to say first up on his birthday? So look, I think I will say on his birthday what millions and crores of Indians say. We thank him for his leadership. We thank him for his untiring efforts at really transforming this country and taking it in a new direction. We thank him for allowing us to dream and reimagine the future of our country. And we thank him for his dedicated, commitment to this whole idea of a strong nation and a prosperous nation and an equitable nation, and for all of his efforts and policies over the last 8 years of being a Prime Minister, over the last 2 decades of being a servant, and of course, I think, we have to thank him more than anything else for where he has led us in the last 2 years during this pandemic. He has brought us, taken us through the storm of the pandemic and taken us to the other side of the storm as a stronger nation, as a much more confident nation, a nation Yes. to which to whom the world looks at with all respect, because all of them had to deal with the same crisis. Yes. All of them had to deal with the same pandemic. And while the big nations are still floundering and struggling to still get out of the COVID impact and effects of COVID, here we are a nation which is the fastest growing economy in the world and have rewritten the narrative of what India is capable of. So let me ask you, Rajiv ji, share with us a personal anecdote of your interaction with him. look, like everybody else, when I first met him 2012, maybe a decade ago, he had this very big persona. He was a doer. He was a man who led from the front. And for several years, I used to engage with him with a lot of trepidation, nervousness, as anyone would. He's a person who's accomplished so much in his life. And I have realized that one of his greatest strengths, and that makes me, has made my transition into being a minister even that much more comfortable, that he is truly invested in other people's success. And he really spends a lot of time in listening to people's views. He is very, for him, it's almost like an article of faith to hear multiple views on a subject and then come to the best conclusion, rather than have it only by a few people or a few officers or a few people. So I think his ability to be available to even smaller, junior ministers is absolutely something that I truly respect him for, and I'm very grateful for. Well, that seems to be a common feedback, that he listens to everybody. But let me ask you, Rajiv ji, the Cheetahs are back in our country since 1952. The Congress believes that this is all propaganda, tamasha. It's they who set the ball rolling. If you go by the Congress's narrative, everything this happened in India, pre-independence, post-independence, and even far after all of us have left this planet, will be to their account. And I don't deny them their little 5 cents of credit taking, but the reality is the only judge of a political party's real achievements or real service to the nation and the people is the voter and the citizen. And while each of them may posture and act and pretend to be having delivered this and having delivered that, fundamentally I think the people of India repeatedly have told the Congress and many other parties that their trust is in Prime Minister Narendra Modi. They trust in him in serving his culture, his politics of service, his culture of actually doing things for the common man and those who are far removed from the corridors of power, and to reaching out to them and creating a framework so that they can also have opportunities. I think that train has left the station, and while Congress and Rahul Gandhi, while they're walking in Kerala and doing their thing, want to take credit for the Cheetahs too, I suspect even the Cheetahs will not agree. But there is a worldview, and I need to ask you this because you are also aware of this. There is a worldview and there is an India view.
And the worldview, largely driven by America, the West, is that Donald Trump and Narendra Modi, they draw parallels between the two, and they try to equate their hate for Donald Trump and what he is as a leader, and they try to say that Modi is the same. Do you believe that's true, or does the world need to wake up to the India view and respect the India view? Look, Anand, the people on the left like to demonize, they like to create these categories and slots. I, frankly, as a proud Indian and more so as a proud, Indian citizen, I think Prime Minister Narendra Modi ji today is a leader of the world's largest democracy, the world's oldest democracy, commands a respect of a different stature. Now, there are many world leaders who may want to be compared to him and may want to be equated to him, but that's something that they want to do. I think the challenges that a Prime Minister Modi faced in 2014 when he became Prime Minister is unparalleled in the annals of the history of the modern world. India, I always like saying this to young students who ask me about one difference between these last 8 years and all the years before, is that for several years and decades, Anand, India was seen as a dysfunctional democracy. A democracy that doesn't deliver for its people. It had a lot of people, a lot of enterprising people, but the government and democratic system never delivered to the true potential of this country. And this even went to a point where the countries to our north, countries like China, would say democracies will never work for large Asian countries. Correct. And actually perpetuated the idea of authoritarian regimes and Marxism and so on and so forth. And it is the same democracy, the same people with a different leader, a leader that has confidence and has the ability to create tools and frameworks and to bring integrity into governance, a dedication and passion into governance that has altered that. The same Congress who's now taking credit for Cheetahs, their Prime Minister in 1985 said, for every 100 rupees that leaves Delhi, only 15 rupees reaches the people of India. He said it, he acknowledged it, and he took it that was the de facto status that nobody could change. And today we have in 2022, Prime Minister Narendra Modi, when under his watch, 100 rupees leaves the government of India's bank account, it goes to the beneficiary's account, all 100 rupees of it, overnight, responsive, immediate, without any leakage and without any corruption. No, I take your point, and I think we've got to be confident about our view and how we see the world and how we want to go about things. Final question quickly. I have Bishweshwar Tuduji also going to be joining us. So Rajivji, let me ask you this. Do you believe PM's work ethic would be your biggest takeaway from him? And a lot of us, as you know, who have come in are all workaholics, and we all thought we were workaholics. I thought I had an amazing work ethic, and I would work large. I had a large capacity to work, but I can very realistically tell you that the work ethic, the unrelenting focus, the span of his work, the ability to look at so many different issues, very granular way as well as a very strategic level at Prime Minister Narendra Modi ji demonstrate day in and day out. We see this in the Council of Ministers, we see this in one-on-one interactions, is absolutely unrivaled, and for somebody like me, deeply impressive. And I can tell you that, people ask me, is celebrating his birthday about deifying him, or are we making this an individual birthday? I said, no, we are not celebrating just him. We are celebrating the entire work ethic that he has brought into governance and politics. Would you ever imagine more than 10 years ago, Anand, that bureaucrats and bureaucracy would be operating at this levels of efficiency and the focus? All these things we never thought would happen in our lifetime. I clearly didn't think it would happen in our lifetime. And we are seeing all this happen out in front of our eyes. And it has a lot to do with his determination, his untiring style of work, and his absolute commitment
to his vision of a new India. No, absolutely. Rajiv Chandrasekhar ji, thank you very much. And you put matters in perspective. So we're going to take this conversation forward. As I thank you, we also say namaste and welcome to Bishweshwar Tudu ji, who is the MOS Tribal Affairs and also MOS Jal Shakti. Bishweshwar ji, नमस्ते. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है. आप हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उनके साथ काम करने का. देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का अवसर पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं और लंबी उम्र के लिए भी भगवान के पास मैं प्रार्थना करता हूं. और देखिए, पहले सांसद के रूप से 2019 से मेरे को मौका मिला काम करने के लिए. उसका जो प्रेरणा, उसका जो मार्गदर्शन, उसको ध्यान में रख के उसको फॉलो करके मैं 2021 जून तक काम किया. फिर जब 2021 में मिनिस्ट्री एक्सपेंशन हुआ, मेरे को आपका मिनिस्ट्री में दायित्व मिला जी, जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स का. जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में मैं ये भी जानता हूं कि आपको कोविड था, फिर ब्लैक फंगस हुआ, तो काफी समय आप थोड़ा अस्वस्थ भी थे. लेकिन प्रधानमंत्री जी को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं यही विषय रखूंगा कि जैसे भगवान के आशीर्वाद से उनको जितना भी ताकत मिलता है और उस क्रम में आज सिर्फ ये देश में नेता नहीं है, ये सारा विश्व का नेता है. उनका जैसे आज छवि हो गया. आप कोरोना से लेकर आप रशिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा था और मोर देन 22,000 जो प्रवासी, चाहे वो ऐसे नागरिक हो या आपका स्टूडेंट्स हो, उनको जैसे उद्धार किया. इससे तो पता चलता है कि आज प्रधानमंत्री हमारा देश का नेता नहीं है, विश्व का नेता है. आज फिर मैं उनका जन्मदिन के अवसर पर मैं प्रभु के पास अर्थात भगवान के पास मेरा ये प्रार्थना रहेगा और भी उनको ताकत मिले और प्रेरणा मिले, वो आगे बढ़े ताकि हमारा देश का नाम बढ़ेगा. और उस प्रेरणा से लेकर उसको हमने आदर्श मान के फिर अपना अपना क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे हमारा डिपार्टमेंट सरकारी काम पे हो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और देश को हम कैसे आगे बढ़ाए और सशक्त कर सके, ये एक्चुअली आज मेरा मैसेज है. बहुत बढ़िया मैसेज, शानदार मैसेज है. विश्वेश्वर जी, मेरे पास समय कम है, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर एंड नाउ ऑफ कोर्स सीनियर बीजेपी लीडर एंड स्पोक्सपर्सन. नकवी साहब नमस्ते, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू. प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आप कैसे उन्हें विश करना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास का मिशन है, और मैं सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास का मिशन इसलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त 2014 में उनको ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की देश ने दी, उस वक्त जो है कोई फूलों की सेज नहीं थी बल्कि कांटों का ताज था जी. उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे, नाकामियों का एक अंबार था, पॉलिसी पैरालिसिस जो है वो सर चढ़ करके बोल रही थी और चारों तरफ ये पता नहीं चल रहा था कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार में कौन है. और आज जो है अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जाए तो लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता है. तो आज एक शख्स के हाथों में एक मजबूत नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व है जो फैसले भी करते हैं और समावेशी विकास के रास्ते पे देश को आगे ही बढ़ा रहे हैं. उनके साथ कोई पर्सनल लम्हा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आपने तो काफी क्लोज उनके साथ काम किया कई सालों से.
मैं सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी के साथ मैं जब यूथ विंग में काम करता था तो मोदी जी जो है वो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे। फिर मैं सेक्रेटरी होकर आया तब मोदी जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर से रहे, और उसके बाद वो फिर चीफ मिनिस्टर बने, और चीफ मिनिस्टर के बाद उनका एक जो सियासी सफर जो है वो एक बहुत ही संकटों के साथ, कंटकों के साथ वो सियासी सफर आगे बढ़ता रहा। और उनके मन में जो है वो उनके ऊपर जितना जुल्म और जितना उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो टूट जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमीन को दगा नहीं देंगे, रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देंगे। तो वो जुल्म सहते रहे, लेकिन देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और भारत माता के जो है वो सुरक्षा और रक्षा के लिए और इस देश के 130, 40, 50 करोड़ लोगों के समस्या के समाधान के लिए संकल्प होकर काम करते रहे। मुझे एक घटना हमेशा याद रहती है, अभी इसी दौरान की है, बहुत घटनाएं उनके साथ बहुत हुई है, लेकिन एक घटना है जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते इस सरकार में फर्स्ट में काम देख रहा था। 2015 की बात है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए थे। तो एक दिन जो है वो उन्होंने जो है वो अपने साथ के लोगों से कहा कि मुझे जो है वो आज खाना जो है वो कैंटीन में जाके खाना है सर, जो एमपीज की कैंटीन है जी। तो चले गए एमटी, उनके साथ 2-3 लोग और 4 लोग थे, वो भी गए। एकदम से मैं उस वक्त लंच था तो मैं सेंट्रल हॉल में बैठा हुआ था, तो कई लोग आए कि साहब वो प्रधानमंत्री जी तो वहाँ भोजन कर रहे हैं। तो मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था, वो सीधे गए, जा करके उन्होंने जो है वो उसके पैसे दिए, शायद 100 रुपये या 60-70 रुपये जो भी थाली का पैसा था वो दिया। आने के बाद उन्होंने जो है वो पूछा लोगों से, सबसे, कि भाई ये थाली कितने की बाहर मिलती है? पता लगा 100 रुपए की मिलती है, किसी ने कहा 150 रुपए की मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि बाहर गरीबों के लिए 100-150 रुपए की थाली और हमारे लिए जो है वो 10 रुपए और 8 रुपए की, ये क्या है? और उन्होंने उसी वक्त जो है वो एमपीज के कैंटीन की सब्सिडी बंद कर दी। और मुझे विपक्ष के जितने भी साथी, बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, क्या करते हो आप, मोदी जी को क्यों ले गए आप वहां पर? मैंने कहा भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि वो कब गए और कब ये सब घटना हो गई। तो ये उस तरह की वो सोच थी। जी बिल्कुल, और ये आई थिंक पीएम ही कर सकते थे। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या पीएम एंटी मुस्लिम या प्रो हिंदू, ये ऐसा कहने वालों को आप क्या कहेंगे? क्या पीएम की नीतियों में पार्टिजनशिप है? अच्छा, आप ये बताइए, जो व्यक्ति आते ही उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास जी 2014 में, फिर 2019 में कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका परिवार, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्या उन्होंने क्या हिंदुओं की बात करी, मुसलमानों की बात करी, सिखों की बात करी, ईसाइयों की बात करी? नहीं, उन्होंने 135-40 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करी जी। और ये तो एक देखिए, 2014 जब जैसे ही मोदी जी आए वैसे ही अवार्ड वापसी अभियान शुरू हो गया, कहा जाना कि असहिष्णुता का ये माहौल हो गया है, मोदी जी आ गए हैं तो अब इस देश में मुसलमान तो जो है वो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। क्या आपको देश को याद है क्या कि भागलपुर में जब दंगा हुआ तो 1 साल से ज्यादा दंगे होते रहे और हजारों लोगों बेगुनाहों की हत्याएं हुई? क्या लोगों को भिवंडी याद नहीं है? क्या लोगों को मलियाना याद नहीं है? क्या लोगों को जो है वो मालेगांव याद नहीं है? एक लंबी श्रृंखला थी, 5000 से ज्यादा बड़े सांप्रदायिक दंगे जिसमें हजारों लाखों बेगुनाह मारे गए थे। 84 का जो आप सिख भाइयों बहनों का कत्लेआम, क्या इस 8.5 सालों में इस देश में इस तरह की क्रिमिनल कम्युनल करतूतें करने वाले कामयाब हो पाए हैं? क्या नहीं हो पाए। वो इसलिए नहीं हो पाए कि, और जब सुरक्षा होगी, देखिए सुरक्षा जो है वो मूल मंत्र है समावेशी समृद्धि का जी। बिना सिक्योरिटी के प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती जी। बिना पीस के प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं सोची जा सकती, और उन्होंने ये किया। उसके अलावा मुस्लिम्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी आपके कार्यक्रम में ज्यादा नहीं होता समय, मैं आपको एक लंबी लिस्ट बता दूं कि 2014 के बाद क्या परिवर्तन समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुस्लिम समाज के जीवन में भी आया है।
बहुत बड़ा परिवर्तन चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी के समय 73% से ज्यादा ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का हुआ करता था, आज 30% नहीं है। उसका कारण है कि उन्होंने जो है वो डीबीटी के माध्यम से जो गरीब, जो कमजोर तबके हैं उनको स्कॉलरशिप दी 5.5 करोड़ से ज्यादा। उसका नतीजा हुआ कि ड्रॉप आउट रेट कम हुआ और इनरोलमेंट बढ़ गया। उसी तरह से सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सिविल सर्विसेज देख लीजिए आप। अब लोग कहते हैं कि साहब ये एकदम से मोदी जी के टाइम में, कुछ लोग इसका निगेटिव भी लेते हैं, कहते हैं कि साहब मोदी जी के टाइम में कैसे, क्यों इतने सिविल सर्वेंट्स जो है वो कंपटीशन में जो है वो सफल हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि काबिलियत की कदर होनी चाहिए जी, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जी, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मेरे पास समय खत्म हो गया, मैं और भी आपसे बात करना चाहता था मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बट किसी और दिन लंबी बात करेंगे। बट फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।